દિલ્હી મુંબઈ એક્સપ્રેસ વે 4 પર આવેલ સાપા ટોલ પ્લાઝા પર મુસાફરો સાથે થઈ રહેલ ગંભીર ગેરરીતિનો પર્દાફાશ થયો છે। વાહન ચાલકોનો આક્ષેપ છે કે છેલ્લા 1 વર્ષથી આ ટોલ પ્લાઝા સિસ્ટમની ખામીના નામે તેમને ખુલ્લેઆમ લૂંટી રહ્યું છે। જ્યારે આ બાબતે ફરિયાદ કરવા માટે લોકો ટોલ પ્લાઝાની ઓફિસે પહોંચ્યા ત્યારે ફરજ પર હાજર મુખ્ય મેનેજર પોતાની ઓફિસ છોડીને કરજણ ભાગી ગયો હતો। મુસાફરોએ જણાવ્યું હતું કે સાપા ટોલ પ્લાઝા પર અનેક પ્રકારની છેતરપિંડી થઈ રહી છે। ઘણીવાર ઉતરવાના ટોલના બદલે સીધા આગળના ટોલનો ચાર્જ વસૂલવામાં આવે છે અને કેટલીકવાર વાહન પસાર ન થયું હોય તો પણ ખાતામાંથી પૈસા કપાઈ જાય છે। સૌથી આઘાતજનક બાબત એ છે કે એક જ સફરમાં ડબલ ટોલ વસૂલવામાં આવે છે અને મહિનાઓથી ઘરે પાર્ક કરેલ ગાડીઓના પણ ટોલ કપાઈ રહ્યા છે। આ બાબતે જ્યારે સ્ટાફને પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે તેમણે ખુલ્લેઆમ સ્વીકાર્યું કે જે ફરિયાદ કરે છે તેમને તો રિફંડ મળે છે, પરંતુ જે ફરિયાદ નથી કરતા તેમના પૈસા ગયા ગણો। આનાથી સ્પષ્ટ થાય છે કે આ કોઈ સિસ્ટમની ખામી નથી, પરંતુ જાણી જોઈને થતી લૂંટ છે। જ્યારે ફરજ પરના મેનેજરને ઘરે પડેલી ગાડીઓના ટોલ કાપવા અંગે સીધો સવાલ પૂછવામાં આવ્યો ત્યારે જવાબ આપવાને બદલે તે પોતાની બેગ લઈને ત્યાંથી નાસી ગયો હતો। આ ઘટનાએ લોકોના ગુસ્સામાં વધારો કર્યો છે। લોકોનો આક્રોશ ફૂટી નીકળ્યો છે અને તેઓ કહી રહ્યા છે કે આ ટોલ પ્લાઝા જનતાનો ખિસ્સો કાપવાનું એટીએમ બની ગયું છે। મુસાફરોએ માંગણી કરી છે કે ગયા 1 વર્ષમાં થયેલ તમામ ખોટી કપાતની સંપૂર્ણ તપાસ થવી જોઈએ અને દરેક મુસાફરને આપોઆપ રિફંડ મળવું જોઈએ। સાથે જ સિસ્ટમમાં સુધારો કરી ભવિષ્યમાં આવી લૂંટ ન થાય તેની ખાતરી આપવી જોઈએ અને ભાગી ગયેલ મેનેજર સામે કડક ફોજદારી કાર્યવાહી થવી જોઈએ। જો આ માંગણીઓ પૂરી નહીં થાય તો આગામી દિવસોમાં આંદોલનની ચીમકી પણ ઉચ્ચારવામાં આવી હતી। સાજીદભાઈ, શું ઘટના બની હતી? આ ટોલ નાકા ઉપર જતી આવતી ગાડીઓના અવારનવાર આમને આમ જ ટેક્સ કપાઈ જાય છે। ટોલ ટેક્સ જે કપાય છે, ગાડી ઘરે પડી હોય તો કપાઈ જાય છે, ગાડી અહીંયા માટર ઉતરી હોય ને દેગામનો ટેક્સ કપાય છે। અવારનવાર આવી ઘણી બધી ઘટનાઓ બને છે। આજે એના ફૂલ પ્રૂફ સાથે હું અહીંયા આવેલો છું। આ એક મારી પાસે સ્ટેટમેન્ટ છે ફાસ્ટેગનું, એની અંદર 8 થી 9 એન્ટ્રી એવી છે કે જેમાં કોઈ ગાડી અહીંયા આવી નથી ને અહીંયા આવીને તે છતાં પણ આનો ટોલ ટેક્સ કપાયો છે ને અહીંયા કોઈ જવાબદાર વ્યક્તિ જવાબ દેવા પણ નથી આવી નથી। પાર્ટ ઇન્ડિયા નામની કંપની છે, જ્યારની એ કંપની આવી છે ત્યાંથી આવા ઘણા પ્રોબ્લેમ થાય છે ને કેટલાક લોકો તો એવા છે કે 80-90 રૂપિયા હારું અહીંયા આવી નહીં શકતા, એટલે કમ્પ્લેન પણ નથી કરતા। એવી તો કઈ કેટલી મેટરો હશે, પણ આજે આ એક જ મેટરમાં આ એક જ ગાડીમાં 8-10 વાર કપાયું એટલે અમે લઈને આવ્યા છે। બાકી એવી ઘણી બધી ગાડીઓ છે ને ઘણી બધી મેટરો એવી છે કે જે તો બોલવા પણ આવતા નથી ને અહીંયા આવે છે તો કમ્પ્લેન લેતા નથી, કોઈ કમ્પ્લેન બુક પર નથી અને કોઈ જવાબદાર વ્યક્તિ પણ નથી કે જેને આપણે કમ્પ્લેન કરી શકીએ। એક મેનેજર ભાઈ હતા કે ક્યારના જતા રહ્યા છે ને અમને 2 કલાકથી રાહ જોવાડે છે, આવું છે। કોઈ રવિન્દ્રભાઈ કરીને છે, એમને કોલ કર્યો, એ એમ કે છે કે માણસ આવશે, એ માણસ હજુ આવ્યો નથી। આ કઈ જગ્યાની ઘટના છે? માટર ટોલ નાકાની। આવું કેટલાક લોકો સાથે થયું છે? આવું ઘણા બધા લોકો સાથે થયું છે, પણ અત્યારે અમે 4 છે। આ સમસ્યા કેટલા સમયથી છે? આ સમસ્યા પાટલી જ્યારથી આ કંપની આવી છે પાર્ટ ઇન્ડિયા ત્યારથી આ સમસ્યા ચાલુ થઈ છે। આવનાર સમયની અંદર શું થશે? મને હવે એમ કે છે આજે તો કે કોઈ બીજી નવી કંપનીએ હેન્ડઓવર કર્યું છે એ લોકોએ, હવે હું થાય છે તો હવે પછી જોઈશું। પણ અત્યારે જે આ કંપની અત્યારે ટોલ લઈને જતી રહી છે, હવે તો આ નવી આવશે તો એ ખબર નહીં હાથ મૂકે કે નહીં, કેમ કે આ મેટરો જૂની છે, હજુ હેન્ડઓવર કર્યું નથી ને એના મેનેજર અહીંયા જ છે ને એ ભાઈ કરજણ જતા રહ્યા છે એવું કે છે। આવે ને કહે ને મેટર હું છે એને બતાવીએ, એ કમ્પ્લેન લે અને રિફંડ કરે એ જોવાનું છે। કેટલા સમયથી અહીંયા તમે મેનેજરને શોધી રહ્યા છો? લગભગ 3 કલાક થયા। શું જવાબ આપવામાં આવે છે તમને? એ ભાઈ એમ કે છે કે હું કરજણ જતો રહ્યો છું, મારા પર્સનલ કામ છે। મેં કીધું તમે ડ્યુટી પર છો? કે હા હું ડ્યુટી પર છું, પણ એ ભાઈ એ આવવાનું ના પાડે છે અત્યારે। પરમાર કલ્પેશભાઈ ભરતભાઈ। શું ઘટના બની હતી આ માત્ર ટોલ? સર અમે અહીં માટરથી ટોલ ટેક્સથી એન્ટર થઈએ એટલે ફાઝલપુર નીકળીએ તો અહીંથી ફાઝલપુરનો ટોલ ટેક્સ 570 છે, તમારા 895 રૂપિયા કાપી લે। કઈ ગાડી છે તમારી? 10 ટાયર ટ્રક છે। કેટલી વાર આવું બન્યું? 3 વાર બન્યું સર। કમ્પ્લેન કરી હતી? કમ્પ્લેન કરી હતી કે અમે મહિના પછી 15 દિવસ પછી તમે કહીશું કે શું થયું, એવું કઈ કમ્પ્લેન જવાબ નહીં આપતા પડે ને કોઈ। મારું નામ દિલીપભાઈ ગોહિલ દિલીપભાઈ। એકચ્યુઅલી એમાં એવું છે તો અહીંથી હું ફાઝલપુર ગયો ને તો અહીં મારા 570 કપાયા, એને આગળ વાસઠ મારા 580 કપાયા, પણ આ 7 તારીખમાં અહીંથી ગયો ઓલરેડી તો મારા 9 તારીખે 895 રૂપિયા કપાઈ ગયા। એ શાના કપાય એ મને ખબર નથી ઓલરેડી, પણ ત્યાં મને ફાસ્ટેગ એટલા બધા ના કપાવો છે એટલે ઓલરેડી મારા 2 જગ્યા ટોલ ટેક્સ કપાઈ ગયો તો અહીંના 895 શાના કપાયા? મારે રિક્વેસ્ટ એટલા માટે છે, બરાબર? આ કમ્પ્લેન નથી કરી, આજે હું કમ્પ્લેન કરું છું એટલે મારા બી 1 વાર ઓલરેડી કપાયા છે, 5 ત્રીજી ચોથી વાર આવ્યો। કઈ ગાડી છે તમારી? મારે બી 10 ટકા જ છે, 10 ટાયરમાં।
राजेंद्र पारा सर। राजेंद्र भाई, यहाँ से पिछले 1 साल से ये टोल नाके पे से डबल लोगों के पैसे कट रहे हैं, जिनकी गाड़ियां घर पे पड़ी है उनका भी पैसा कट रहा है, उस बारे में आप क्या कहोगे? सर ऐसा तो नहीं, कभी कभी एंट्री नहीं होती है तो एक्चुअली हो जाता होगा, लेकिन हम उसका 10 से 12 दिन हम उसका निदान करते हैं। जो कंप्लेंट आती है उनको निदान करते हैं, ऊपर फॉरवर्ड करते हैं सर उनको 10-33 पे ही कंप्लेंट करवाते हैं यूजर से हम। फिर नहीं होता, हम अपने हिसाब से कंप्लेंट हमारे सीनियर को करते हैं। 10 से 12 दिन हम सर पैसा रिटर्न फास्टैग में हो जाते हैं सर। 10 बार लोगों का पैसा कटता है सर, घर पे गाड़ियां लोग 80-85 रुपए के लिए कितनी बार कंप्लेन करेंगे? वो सही है आपकी बात सर, लेकिन कभी कभी एंट्री अच्छा, ये टेक्निकल खामी है सर, ये खामी टेक्निकल है, उसका जवाब दो। ये सर खामी कभी कभी एंट्री नहीं होती है, कभी नहीं, ये बहुत सारे ग्राहकों की ये टेक्निकली समझो आप। हाँ, तो 1 साल से ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा। ये ऐसा सुनने में आया है कि ये रुपया आप लोग लेते हो और इससे खाने पुर रहे हो ना, ऐसा तो कुछ नहीं है? सर। हम तो आता है कोई मैसेज आता है हमारे पास, तुरंत फॉरवर्ड करते हैं। मैसेज आता है तभी आप जागते हो? मैसेज आता है, कोई गाड़ी वाला कंप्लेन करेगा तभी आप जागते हो? उसके बाद आप देखते हो? वैसे कैसे पता लगेगा सर? सर 1 साल से यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, बड़े गरीब लोग का पैसा सबसे ज्यादा यहाँ पे गया है, आपको मालूम है? सर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम बरोबर ऊपर सीनियर को करते 10 से 12 सीनियर को फोन लगाओ, चलो आपके सीनियर को फोन लगाओ। इसलिए पूरे भारत में ऐसा कोई भी आप मैसेज दिखाओ ना सर, जब तो लगाऊं फोन में मैसेज दिखाओ। मैसेज में आपको बहुत सारे बताता हूँ, आप पहले फोन लगाओ, मैसेज में आपको बहुत सारे बताता हूँ। ऐसे फोन थोड़ी लगता है साहब, ऐसे फोन थोड़ी लगता है साहब। मैसेज में बता रहा हूँ आपको, आप मैसेज दिखाओ, मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ। आप मैसेज सीसीटीवी कैमरा चेक करो, चलो आप मैसेज दिखा दीजिए, मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ उनको 10-33 ऐसा नहीं चलेगा कि मैसेज दिखा दो मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ। ये तो फिर रोज का लग गया, रोज लोग ना, रोज का कुछ नहीं सर, कभी कभी हो जाता है, रोज का कुछ नहीं है। रविंदर कुमार। सर आपको किसने यहाँ पे भेजा है? किसने भेजा? आपको किसने फोन करके यहाँ पे भेजा है? मेरे पास फोन आया था यहाँ से। हाँ, किसका फोन आया था? अब ये मुझे नहीं पता किसी का फोन मेरे पास साहब आया। का फोन आया था आपने? कौन से साहब? यहाँ पे सब कंप्लेन करने आए हैं। नहीं, मेरे पास आपका फोन, आप में से किसी का फोन आया था तो मैं यहाँ पे यहीं पे था तो आ गया। कंप्लेन बॉक्स है यहाँ पे? कंप्लेन बॉक्स मेरा कल हैंडओवर हो चुका है। तो आप साथ में कंप्लेन बॉक्स? मेरा कल हैंडओवर हो चुका है। हैंड ओवर होता है तो आप कंप्लेन बॉक्स साथ में ले जाते हो? अब जो नया कंपनी आएगा वो नया कंप्लेन बॉक्स लेके आएगा? यस। यानी सब जो जूना लोगों का पैसा गया है वो लोग को पैसा आप देने वाले थे या ये जो नया? मेरे पास कंप्लेन आएगी, आगे भी मैं दूंगा। लेकिन आप कंप्लेन बॉक्स ही ले गए हो, आप ही चले जाने वाले हो? मेरे आप 1 महीना रुकोगे, उसके बाद इसके लिए ऑनलाइन प्रोसेस है। 1033 पे आप कंप्लेन लॉक करवाइए, आपका जो भी इशू, जो भी सर इशू है वो आपका सॉर्ट आउट होगा। मेरी बात सुनो, मेरी गाड़ी घर पे खड़ी है। यस सर। उसका पैसा यहाँ से कटा, 1 बार नहीं 5 बार कटा। 5 बार मैंने आके यहाँ पे कंप्लेन किया है, बराबर है, फिर भी पैसा नहीं आया है। अब क्या करो? कंप्लेन कहाँ किया सर आप? यहाँ पे ऑफिस पे आके नहीं, वो 1 नंबर की 2 नंबर सामने वाला। ऑफिस पे किया पहले। जब तक आप बोल रहे हैं कि मेरा पैसा कटा है, तो जब तक पैसा मैं चेक नहीं करूंगा तब तक पैसा रिफंड कैसे करूंगा सर किसी भी चीज के? ठीक है सर, पूरे पुरावे के साथ में आया। हाँ ठीक है सर। फिर भी यहाँ पे बोलते हैं कि कंप्लेन कर दो हो जाएगा, लेकिन नहीं होता है। अच्छा सर मेरा तो छोड़ दो कि मेरा तो चल गया, बराबर। लेकिन जो आम आदमी है जिनको नॉलेज ही नहीं है ऑनलाइन, जो आप बता रहे हो 1033 नंबर पे, बराबर है, उन लोग का जो पैसा कटता है बिना फोकट का, जो गाड़ियां घर पे रहती है, बराबर है, जो यहाँ पे मातर उतरते हैं और भरूच का टोल टैक्स कटता है सर, आपके खाते में पैसा ज्यादा आता है, आप उन लोग को पैसा वापिस करते हो। 1033 पे कंप्लेन नहीं आता है तब तक आप उन लोग का पैसा वापस करते हो? खाली उसका जवाब दो, हाँ या ना। कंप्लेन आएगा सर, कंप्लेन आएगा तो मैं रिफंड करूंगा बिल्कुल। अगर नहीं आएगा तो? कंप्लेन नहीं आएगा तो कैसे पता चलेगा कि ये भाई है, ये भाई यहाँ से निकल गया, ये अभण आदमी है, इसके अंदर कुछ ये साग भाजी रिंगन बटा के बेचता है, बराबर है, ये यहाँ से निकल गया, बेचारे का पैसा कट गया, बराबर। 1033 पूरे एक्सप्रेसवे पे, पूरे एक्सप्रेसवे पे है सर, पूरे एक्सप्रेसवे पे है सर। वाले नहीं है लोग, उसमें कुछ आदिवासी भी और हमारे जैसे अभण लोग भी ऐसे, हमको नहीं आता है, तो आप मेरा पैसा किस तरह से रिफंड करोगे? रिफंड करेंगे, मेरे पास यहाँ पे कंप्लेन आएगी, जब तक नहीं करेंगे। लेकिन कंप्लेन नहीं आएगी तो आप रिफंड करो। मुझे इतना जवाब दो सर, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अगर किसी आदमी की कंप्लेन नहीं आती है, उसका पैसा कटा हुआ है जिन जिन लोगों का, उनको आप पैसा वापस दो। मैं पहली चीज तो मैनुअल ट्रांजैक्शन नहीं बनाता हूँ, सिस्टम ट्रांजैक्शन बनाता है, बैंक को जाता है सिस्टम से ही, ठीक है, वही पैसा कटता है जो बैंक को जाता है।
उससे अदर कोई पैसा नहीं करता। अगर जो लोग की गाड़ियां घर पे पड़ी है उन लोग का पैसा कट गया और नहीं आया तो आप उन लोग को पैसा वापस देते हो या नहीं देते हो? पैसा मेरे पास जब तक कंप्लेन नहीं आएगी तो मैं कैसे करूंगा यानी सर? वो पैसा आप मेरे खा रहे हो, पास स्पष्ट ऐसा लग रहा होता नहीं है, और अगर हो रहा है तो मेरे पास कंप्लेन। आप सीसीटीवी कैमरे में चेक करोगे कितनी गाड़ियां यहाँ से ऐसा होता नहीं है सर, अगर हो रहा है तो मैं आपको 100 कंप्लेन रुपया आएंगी आदमी सर। से लेना है और आपके ट्रांजेक्शन में 1000 रुपया आ गया तो आपको चौंकाने वाली बात तो बनेगी ना कि साला मुझे 100 लेना था तो जो 900 रुपया आ गया 100 लेना है तो 100 ही आएगा सर, 1000 नहीं तो आएगा। मेरा 85 रुपया जो गया है कल, हाँ। मैंने आपको अभी बताया जी। बराबर है, वो 85 रुपया आपने किधर डाला? आपके पैसे कटे हैं तो आप मुझे दिखाइए, मैं चेक करवाऊंगा। अभी बताया मैंने, सिस्टम के थ्रू, आपके ऊपर सिस्टम अधिकारी को भी मैंने बताया, उन सर, लोग ने सिस्टम के थ्रू मैं ऑनलाइन किया है। हाँ, मैं बराबर है, पहले उसको आप चेक करवाऊंगा। और क्या क्या है वो, हमको ऐसा गलत जवाब मत दो। गलत तो जवाब सही नहीं है दे वो रहा तो। हूँ, सही मैं है इतना बिल्कुल। बोलता हूँ कि जो ज्यादा पैसा आपके खाते में आया है, जिन लोग को आपने वापस नहीं दिया है, जिन लोगों ने कंप्लेन ही नहीं किया है, वो पैसे का आप क्या करते गलत पैसा नहीं कटता है सर। मैं अभी बता रहा हूँ आपको। सर अगर गलत पैसा सर कटा है, गलत चलो पैसा नहीं CCTV कैमरा चेक करो, गलत आपने पैसा चेक नहीं करते। आप मुझे भेजिए, मैं चेक करवाऊंगा ना सर, कैसे कटा पैसा वो। मेरी बात सुनो, मैंने कब अगर मना मैं- किया है? हाँ? अगर गलत पैसा कटा है तो मैं उसको रिफंड करने बैठा हूँ। पर मैं आता ही नहीं था, आप मुझे पैसा किस तरह से वापस करते? नहीं, पैसा जब आप पैसा मुझे गलत, इतना जवाब दो, मैं अगर इधर आता ही नहीं तो ये पैसा मुझे तो किस गलत तरह से पैसा कटा ही नहीं फिर आपका, है? फिर गलत पैसा कटा ही नहीं आपका। यानी कि जो आएगा उसका ही गलत पैसा कंप्लेन यानी अब करेगा, आप पकड़ा गए हो यहाँ पे, या जो आएगा उसका ही पैसा गलत कंप्लेन है। आएगी तो बराबर, ठीक करूंगा है, ठीक सर। है, चलो। सर मेरा 3 बार गलत पैसा करा, गलत